students, एरिया में देखो एक्सरसाइज 7 के नंबर 9 क्वेश्चन ऑफ बेस अच्छे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन हम जो एक्सरसाइज टाइम रे पढ़ी थी ना थ्योरी टाइम रे जेतला हमें डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ी थी ना से टाइप रे क्वेश्चन जगह अछि x दे दीजिए y दे दीजिए केन जगह रे पैरामीटर ता t दीजिए केन जगह रे u दीजिए तो से जगह रे हम खाना काट देना फर्स्ट dx by dt काट देना then dy by dt काट देना then dy by dt by dx by dt similar case जगह भी करना सही समान so we have to find dx by dt and dy by dt then divide dy by dt with respect to dx by dt so we get dy by dx so dx so number 1 x is equal to a cos t plus log of tan t by 2 and y is equal to a sin t. So dy by dt a cos t differentiation of y with respect to th variable or parameter का इजागर th. Now dx by dt equal derivative of so this is whole multiplication. So derivative of a cos t plus log of tan t by 2. एटा कांस्टेंट है बाहर के पुले आसवा a कांस्टेंट so derivative of cos t minus sin t so a into minus sin t plus log of tan t by 2 रा डेरिवेटिव के देवा 1 by tan t by 2 into derivative of tan t by 2 tan t by 2 रा डेरिवेटिव sec square t by 2 a into minus sin t plus 1 by tan t by 2 tan t by 2 रा डेरिवेटिव sec square t by 2 into t by 2 रा डेरिवेटिव कर करबो इट इज 1 by 2 तो अगर tan और sec क्या मैं sin cos कर दो a into minus sin t plus 1 by sin t by 2 by cos t by 2 and this is 1 by cos square t by 2 and this is 1 by 2 so गुटे cos cancel out हो गेला बाकी जहां रहला हमें ताके सॉल्व करना this is a into minus sin t plus 1 by 2 sin t by 2 cos t by 2 and this is sin t this is equal to a minus sin t plus 1 by sin t then solve करना out के and this is equal to a sin t ऊपर गले के minus sin square t plus 1 by sin t and 1 minus sin square t cos square t so this is equal to a cos square t by sin t और 1 minus sin square t cos square t by sin t and this is dx by dt we have to find dy by dx so dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt dt cancel out हो गेला क्या रहला dx by dy by dx so dy by dt टा के a cos t and dx by dt टा a cos square t by sin t so a cancel out हो गेला गुटे cos t cancel out हो गेला sin t टा ऊपर के बोला so is sin t by cos t so this is equal to tan t ठीक है so derivative of x with a derivative of x is equal to a cos t plus log tan t by 2 and y is equal to a sin t का डेरिवेटिव कितना है tan t ठीक है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो sin x is equal to 2t by 1 plus t square इटा अपने क्वेश्चन हम करिजु जेतला हम पैरामीट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन पढो ना
हमें ये क्वेश्चन टाइप ई टाइप रो सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन हम करिस so second bit sin x is equal to 2t by 1 plus t square and 10y is equal to 2t by 1 minus t square so x is equal to कितने है ये जगह so x is equal to sin inverse of 2t by 1 plus t square and this is equal to 2 tan inverse of t direct formula আছে আমাদের and now here y is equal to tan inverse of 2t by 1 minus t square and this is equal to 2 tan inverse of t ठीक है जी so dx by dt टा कितना है 2 by 1 plus t square and dy by dt टा कितना है 2 by 1 plus t square and dy by dx डिवाइड कर दो दुईटा के सो दिस 1 ठीक है नेक्स्ट नंबर cos x is equal to root over of 1 plus t square and sin y is equal to 2t by 1 plus t square so सही क्वेश्चन मिला अगर 2 sin x is equal to 2t by 1 plus t square है जगह sin y is equal to 2t by 1 plus t square so just टिके चेंज हो सब जगह रे so number 3 cos x is equal to root over of 1 by 1 plus t square and sin y is equal to 2t by 1 plus t square. So this implies cos x. So cos x, so x is equal to cos inverse of root over of 1 by 1 plus t square and y is equal to sin inverse of 2t by 1 plus t square. And sin inverse of 2t by 1 plus t square just previous question हमें करना is 2 tan inverse of t. ठीक है and here let put t is equal to tan theta. So x is equal to cos inverse of root over of 1 by 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So this is equal to cos inverse of root over of 1 by sec square theta and 1 by sec square theta is equal to cos square theta. So cos inverse of cos square theta the root and cos square theta the root cos theta. So this is equal to theta and theta is equal to tan inverse of t. ठीक है now dx by dt कितने जो है if x is equal to tan inverse of t so dx by dt is equal to 1 by 1 plus t square and dy by dt is equal to 2 by 1 plus t square. So dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt. So 2 by 1 plus t square 2 by 1 plus t square by 1 by 1 plus t square. So this is equal to 2. Yes, so next question करवा question I भी x is equal to root sin 2u and y is equal to root cos 2u. डिफरेंशिएशन रा क्वेश्चन करवा ले बहुत मजा लावा यदि क्वेश्चन हो जे यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करि पार जे हमको बहुत बढ़िया लावा डिफरेंशिएशन रा और डेरिवेटिव रा क्वेश्चन करवा ले जदी नाही हबा त हमको बहुत प्रैक्टिस करवा लगे इंद्र के हम डेरिवेटिव बहुत बढ़िया चटपटे पढ़वार लगी जानवार लगी तार एप्लीकेशन यूज करवार लगी जेंदा कि हमर बहुत जगह रे यूज हो फिजिक्स रे केमिस्ट्री रे बहुत जगह रे हमर ई जिनिसटा डेरिवेटिव का हमर यूज होछ. So I will let x is equal to root over of sin 2u and y is equal to root over of cos 2u. तो अभी हमें जेहेतु इटा with respect to u दे पैरामीटर टा u दे छे तो डिफरेंशिएट करबा with respect to u. So first हमें dy by du करना dx by du करना then dy by theta डिवाइड करना. So जेहेतु फर्स्ट एक्सरसाइज so dx by du is equal to derivative of root over of sin 2u equal to 1 by 2 root sin 2u into derivative of d by du. सब जगह हम देखबा पैरामीटर टा चेंज नहीं होता मतलब d by dx नहीं लिखे तो बात पैरामीटर टा इंपोर्टेंट जगह हम जगह दिन लिखे दीजिए d by du
So derivative with respect to हमें u differentiate करूँ. So dy du of sin 2u. So this is 1 by 2 root sin 2u into cos 2u and derivative of 2u 2. ठीक है. So 2 to cancel out हो गया. पहला क्या थे? Cos 2u by root over of sin 2u. Similarly dy by du करना है. dy by du. The derivative of root over of cos 2u. Root over of cos 2u रो derivative कितना होगा? 1 by 2 root over of cos 2u into derivative of cos 2u. Derivative with respect to u. So cos 2u रो derivative minus sin 2u. So 1 by 2 root over of cos 2u into minus sin 2u into 2. Derivative of 2u 2u. So 2 to cancel out here. So हमको एवे काना करवार है dy by dx. So dy by du by dx by du. So dy by dx and this is equal to this by this minus sin 2u by root over of cos 2u by cos 2u by root over of sin 2u and this is equal to अभी इस sin 2u रो रूट टा ऊपर के पलेगा and cos 2u टा इना मल्टीप्लाई करो. So this is equal to minus sin 2u by cos 2u whole to the power 3 by 2 and this is equal to minus tan 2u to the power 3 by 2. ठीक है. So then हम derivative of dy by dx if x is equal to root over of sin 2u and y is equal to root over of cos 2u. Then हमें next number देखना. Number b. बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है number b. It is cos inverse cos cube t x is equal to cos cube t by root over of cos 2u and y is equal to sin cube t by root over of cos 2t. बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे टिके लंबा हवा लेंदी क्वेश्चन टे सीबीएसई रे बही रे भी अछि सीएचएससी बही रे भी अछि. देखो ए क्वेश्चन टा. सो नंबर बी. सो लेट x is equal to cos cube t by root over of cos 2u and y is equal to sin cube t by root over of cos 2u. ठीक है. सो अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना टिके सिंप्लीफाई करना देखना कहां है. सो dx by t. So dx by dt. So obviously division formula पढ़वा. So cos cube t derivative of cos cube t into root over of cos 2t minus derivative of root cos 2t into cos cube t by cos 2t. So it's root over of cos 2t का square that is cos 2t. So अब differentiate करना. Cos cube t का derivative करें 3 cos square t into derivative of cos t into देखो ना derivative of cos t it is minus sin t into root over of cos 2t minus root over of cos 2t का derivative 1 by कितने पर लिखेंगे minus 1 by 2 root over of cos 2t and cos 2t का derivative into cos cube t by cos 2t. So this is equal to minus sin t and this is equal to minus sin 2t into 2. So this is equal to 3 cos square t d by dt of cos t minus sin t into root over of cos 2t
माइनस cos 2t का डेरिवेटिव sin 2t और 2 sin 2t by root over of cos 2t into 2 into cos 2t by cos 2t. So 2 to cancel out होगा এটা কত হবে माइनस माइनस प्लस cos 2t ର डेरिवेटिव माइनस sin 2t into 2t ର डेरिवेटिव ହେଲା 2 ଏଟା ହେଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ डेरिवेटिव इधर टिके सॉल्व कर दमा dx by dt के काना आइबा देखो सो रूट ओवर cos 2t जदी ऊपर के पले आसला सो दिस इक्वल माइनस 3 cos square t into sin t into root cos 2t that is cos 2t plus sin 2t into cos 2t by cos 2t whole to the power 3 by h ये root cos 2t टाइप तो क्या पहले आसान so root cos 2t whole to the power 3 by 2 so dx by dt टाइप का हम लेंगे ठीक है जी नेक्स्ट स्टेप हम बाहर करना dy by dt तो रेगुलर हमें इतना के टिके लिख दूं साइड में ये तो लंबा क्वेश्चन है हमको साइड पे उधर कर पड़ेगा so dx by dt और अगर हम dy by dt बाहर करना तो स्टार्ट करो so now dy by dt is equal to derivative of sin cube t by root over of cos 2t so derivative of dy by dt of sin cube t into cos 2t रा root minus derivative of root over of cos 2t into sin cube t by cos 2t similar केस जंदा हम dx by dt के बारे में ना ये भी हम सही जिनिस टाइम बारे में and now this is equal to sin cube t रा डेरिवेटिव 3 sin square t into derivative of sin t into root over of cos 2t minus root over of cos 2t 1 by 2 root over of cos 2t into derivative of cos 2t into sin cube t by cos 2t and this is equal to sin t का derivative cos t so 3 sin square t cos t into root over of cos 2t minus cos 2t का derivative minus sin 2t into 2 so minus minus plus sin 2t by root over of cos 2t h 2 2 इस जगह रे थिया 2 2 कैंसिल आउट है इस जगह रे 2 बाहर इस जगह रे 2 h into sin cube t by cos 2t तबे जनता में cos 2t की ऐड के ना सिमिलर केस करना so dy by dt is equal to 3 sin square t 3 sin square t into cos t 3 sin square t into cos t root over of cos 2t ऊपर के प्लस ले मल्टीप्लाई है cos 2t जीरो प्लस sin 2t into sin cube t sin 2t into sin cube t by cos 2t whole to the power 3 by 2 so ଏବେ हमको dy by dx दरकार वो कौन दरकार dy by dx so this by this so dy by dx हम जैसे बाहर करना कौन आएगा this by this रे cos 2t whole to the power 3 by 2 cos 2t whole to the power 3 by 2 cancel out हो जाएगा रहा कितने 3 sin square t cos t cos 2t plus sin 2t sin cube t by cos 2t
होल टू द पावर 3/2 अछि बाय -3 cos square t sin t cos 2t plus sin 2t cos cube t by cos 2t whole to the power 3/2 अछि। So ये तलटा कटि जीवा cos 2t whole to the power 3/2 cos 2t whole to the power 3/2 कैंसिल हो गया रहला केते 3 sin square t cos t इबे cos 2t के हमें sin cos रे कन्वर्ट करबा सो sin cos कर देला काना हबा cos square t minus sin square t plus sin 2t के भी sin cos रे कन्वर्ट कर दबा इज 2 sin t cos t into sin cube t by this -3 cos square t into sin t cos 2t is equal to cos square t minus sin square t plus sin 2t is equal to 2 sin t cos t into cos cube t. Then solve this. इतना क्या हमें सॉल्व करना काना हो जाता सो ऊपरा काना करना इस जगह रे sin t cos t जो कॉमन नहीं पारमा इस जगह रे भी sin square t cos t है और ऊपर चलो हमें काना करना sin t cos t कॉमन नहीं जीवा इना भी sin t cos t कॉमन हम करना कटि जीवा बाकी जहाँ रहला so इक्वल टू 3 और फर्स्ट कॉमन ले जो इज इक्वल टू sin square t गोटे sin t cos t पलाना कॉमन गला तो रहला केते 3 sin t into cos square t minus sin square t प्लस अगर वो sin t cos t गला तो रहला 2 sin cube t बाय तलो भी sin t cos t कॉमन आने पकाना सो रहला केते पहला sin t cos t कॉमन आने पको रहला -3 रा कैंसिल आउट गेला सो -3 cos t into cos square t minus sin square t plus এটা कॉमन पड़े गला सो 2 cos cube t तो एबे काना करवा एते ही सरला परे ऊपरटा के सबु के sin कर दमा आ तलटा सबु के cos कर दमा ई जगह में cos square t के sin करि परमे ई जगह रे sin के cos करि परमे तो ऊपर खाली sin रखे दमा तले खाली cos रखे म्हणजे तो बाहर बाहर sin अछि ऊपर सबु के हमें sin कर दे sin कर देला काना बा सो दिस इक्वल टू 3 sin t into this 1 minus sin square t 1 minus sin square t is equal to 1 minus sin square t minus sin square t that is 1 minus 2 sin square t plus 2 sin cube t by minus 3 cos t into cos square t minus sin square t it is 1 minus sin square t कर देला केते या 2 cos square t minus 1 plus 2 cos cube t so अबे so 3 sin t minus 3 into 2 6 sin cube t plus 2 sin cube t by minus 3 into 2 minus 6 cos square t ये cos cube t minus 3 minus 1 plus 3 cos t plus 2 cos cube t ठीक है and this is equal to 3 sin t minus 4 sin cube t by 3 cos t 3 cos t minus 4 cos cube t and this is equal to minus sin 3t by cos 3t
is equal to minus 10 theta. So this is all about number 8 of exercise 7K. Indiki amar differentiation of parametric form the question based. Thank you.